I first of all, I'm not using the word we are fortifying it. I think we are legitimately building our border infrastructure because they have built their border infrastructure. In my view, we should have done it 25 years ago. Again, we are reactive, that means. I mean, Your words, Dr. Jaishankar. No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो, आपने अपमान तो भारतीय सेना, उनके शौर्य और उनके पराक्रम का किया और इस देश की भूभागीय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया. उनका कहना था और मैं यहां पर कोट करती हूं, they meaning China is the bigger economy, we are the smaller economy, we can't go and pick a fight with them. 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है. और ये कौन बोल रहा है? एक हमारे यहां लोकोक्ति होती है, उसका बड़ा पॉपुलर सेइंग है, वो सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद. क्योंकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने और डींग हाँकते हुए बोला कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीन में भारतीय का राजदूत रहा हूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना. ये डींग भी उन्होंने हाकी. तो ये कह देना कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे. आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, कि हम छोटी इकोनॉमी है? उस तरह से तो महा पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए. हर सैनिक जो वहां पर खड़ा है उसका हौसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है. Look, I cannot vouch for the exact words either, but I think it was probably in the context of China, if China. I remember right. Yeah, he's not convinced about China. Yeah, that but he thinks that you are opaque about it. I don't know whether it's opaque or whether, there was a sort of a level of knowledge, understanding. I mean, all I can say in my defense is I have been the longest serving ambassador in China. I have been dealing with a lot of these border issues for a very, very long time. I would say, let me put it to you this way, I'm not suggesting I'm necessarily the most knowledgeable person, but I would have a fairly good self-opinion of my understanding of what is out there. Okay. But, if he has superior knowledge, wisdom, I'm always, as I said, for me, life is a learning process. Superior knowledge, wisdom on China. If he has, I'm always willing to listen. Okay. And learn from Mr. Rahul Gandhi on China. If you think that that's a possibility, I have never closed my mind to anything, however improbable it is. कि उन्होंने काफी सारे हैट्स पहने हुए हैं और उन्होंने वन ऑफ द हैट्स डिस्क्राइब किया कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर हूं. मेरे 6 पॉइंटेड सवाल हैं उनसे. एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर चाइना का, सबसे ज्यादा वक्त तक चीन में भारत के राजदूत रहने के तौर पर, वो जो चीनी अग्रेशन की फोटो आती हैं, जो खबरें हैं कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? वो यथावत स्थिति अप्रैल 2020 के बारे में क्या कहेंगे? और वो क्या कहेंगे कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब हमारी बफर जोन बन चुके हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक. वो क्या कहेंगे जो पुल बनते जा रहे हैं? उनका कहना था वो तो पहले से चीनी अतिक्रमण था, अतिक्रमण पहले से था, पुल अभी बन जाएगा, उनका बेस अभी बन जाएगा और आप अपने मुंह पर दही जमाए, मुंह पे उंगली डाले बैठे रहेंगे. जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीन में भारत के राजदूत रहे, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को यह एडवाइस किया था कि वो पूरे देश के सामने, पूरे पार्लियामेंट के सामने ये झूठ बोले कि कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी? जो सबसे लंबे भारत के चीन में राजदूत रहे, जयशंकर जी से यह पूछना है कि क्या जो चीन पैंगोंग लेक पर
डोकलाम में ब्रिजेस बना रहा है, फोर्टिफाई कर रहा है, उस पर वो चुप रहेंगे? क्या उनकी एडवाइस है कि ये सरकार चुप रहे और ध्यान भटकाए? जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर इंडिया के चीन में रहे, उनसे ये पूछना है, चीन एक रेलवे लाइन बना रहा है, इससे क्या हमारी भूभागीय अखंडता पर खतरा नहीं है? क्या डीबीओ पर जो जंक्शन चीन के अतिक्रमण पे, उससे खतरा नहीं है? और एक बात जरूर पूछनी है लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर चीन से, कि आप ही के फॉरेन सेक्रेटरी चिंता जता रहे थे अनमैनेजेबल $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पर, उनसे भी कुछ कह दीजिए। इंटरव्यू देना और वहां पर डींगे हाँकना बड़ी बात है, 1 घंटा 41 मिनट का आपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप दंभ भरते हैं कि आप चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक बने रहे राजदूत हैं। और एक चीज, ना मैं ये मजाक से कह रही हूं, ना मैं हल्केपन में कह रही हूं, एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। आपको अपने ही, जिसने आपके साथ गलत बर्ताव किया, उसी से प्यार हो जाता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। स्पेशली किडनैपिंग में इसका बड़ा यूज होता है। क्या जयशंकर जी स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित हैं? सवाल ये सारे चीन पर पूछने चाहिए, लेकिन आप और आपके आका जब मौका मिलता है शी जिनपिंग की गलबैया करने लगते हैं, गले लगने लगते हैं, लाल आंख दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर स्वागत में खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप स्टॉकहोम सिंड्रोम से सफर करते हैं? ये सवाल चीन पर पूछे जाएंगे। I think they are deliberately misrepresenting the situation. I give you 2 very specific examples of that. You remember that whole halla which happened on a bridge? You know, they were building a bridge in Pangong Tso. Yeah. When did that area actually come under Chinese control? Yeah, I've seen that. You said that it is long back. I'll tell you when it came. The Chinese first came there in 1958 and Chinese captured it in October 1962. Now you're going to blame Modi government in 2023 for constructing a bridge which the Chinese captured in 1962? And you don't have the honesty to say that is where it happened. Or let me give you another example. You know, these border villages. Now there were border villages which have come up in areas which the Chinese actually, you know, in Longju, there was a clash and it's not a secret, you know, at that time it was hotly debated in India, in the parliament, in the media. So what happens, you do the smoke and mirrors, you know, say, oh, there's something happening here. It's almost like 1962 never happened. It is like, you know, we should be, let me give you a very, very, a different example. Everybody says, you know, we should be having our troops up there, we should be building border infrastructure. Hello, why didn't you build that border infrastructure? I just look at the budget of the border infrastructure. During the Modi period, the budget has gone up 5 times. You know, till 2014, roughly it was 3,000, 4,000 crores was the budget. Today it is 14,000 crores. If you look at the roads which are built, you look at the bridges that are built, they have doubled or tripled. You look at the tunnels which are taking place. I mean, this government is serious about border infrastructure. Whereas we know the underlying thinking earlier was, you know, let's leave it like that, then the Chinese can't come inside. Which meant you had no intention of contesting them when they came. क्या ये सच नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट ने एक्टिव इंफ्रा पॉलिसी और रोड्स टनल्स बनाने के लिए 2006 में पॉलिसी बनाई थी और ये श्याम सरन टास्क फोर्स 2006 में बना था और बहुत सारी चीजें इसकी 2014 तक खत्म हो गई थी? क्या यह सच नहीं है कि इंडियन नेवी ने यूएस नेवी नियर ईस्ट चाइना सी में 2007, 2009, 2011 और 2014 में एक्सरसाइजेस किए थे? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 50,000 स्ट्रॉन्ग नई 2 माउंटेन डिवीजन सैंक्शन करी थी? और क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4 एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड चुशूल में, फुकचे में, डेमचौक में, दौलत बेग ओल्डी में सैंक्शन किए थे? और अगर यह सब सच नहीं है तो यह सब चीजें कैसे बन गई 2014 तक? 2014 तक तो ना आप थे और ना आपके आका थे। तो झूठ बोलना कूटनीति का तंत्र नहीं हो सकता है। That I feel that I'm talking to an audience which is deliberately deaf, that they do not want to hear sometimes, they do not want to absorb sometimes, that and there is a very strong bias. I mean, let's be frank about it.
Newspapers, there are newspapers, I don't want to go into names, who will publish something absolutely ridiculous on one side, and you say, okay, I want to counter it. They say, no, hang on a moment, I'm busy doing a fact check on what you are saying. So we saw this bias very, very clearly over the last 4 years. I think in fact, I expect it to, if anything, grow as the election comes closer, because I don't think this is without a political direction and purpose. So domestic politics playing a part. Domestic politics, it could be domestic politics, it could be COVID, it could be it could be different. Big business playing its part also. It could be. Look, I'm not a conspiracy theorist. Okay, what I'm explaining to you is actually politics at work. Okay, it doesn't have to be conspiracy at work. Okay. Why is it difficult to understand that there are ideologies and political forces outside India very similar to those in India, and the two are working hand in glove? I mean, I'm putting a perfectly common sense proposition before you. And part of the problem is when political forces in India are not doing so well electorally, they tend to kind of summon up this support system, if you would, or the echo chamber, or call it what you would. कि जो होता है इस देश में, जो भी गलत होता है वो इंटरनेशनल साजिश हो रही है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। अगर मैं आप ही की बात मान लूं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर इतनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस देश में हुई जा रही है तो प्रभु एज फॉरेन मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कौन सी नैरेटिव सेटिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिकल वॉर्स की आप बात कर रहे हैं ना, कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? Speech that somebody gave in a European city, or New York, a newspaper edit somewhere. We are debating actually politics, which is being conducted ostensibly as media, as so. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. I mean, you'll do a hatchet job. Then you want to do a hatchet job and say, well, this is just another quest for truth which we decided after 20 years to put out at this time. So I mean, come on, you think the timing is accidental? I mean, let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. Okay. So this is what it is, that, there's a lot that is being said, that the rise of Mr. Modi and consequently the rise of India, these two things are happening at the same time, which is not acceptable to people in these Western capitals that you're talking, and certain Indian quarters too. Do you agree with that point of view? I mean, do you doubt it? I'm asking you. No, look who welcomes because it. Ashley Tellis, Ashley Tellis, right? Who are cheerleaders. Your friend. Let me answer your question. What is happening is, just like I told you, this drip, 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 how do you shape a very extremist image of India, of the government, of the BJP, of the Prime Minister? Huh? I mean, this has been going on for a decade. Okay, let's not have illusions about it. How some of this has a different variant, which is you will say something, there's an echo chamber, it'll be picked up outside, then you say, aha, see, they're saying it outside, that must be true. Then you will say it inside. So there's a ding-dong going on. See, look, this is a globalized world. People take that politics abroad. Politics of India doesn't stop at its borders. Sometimes politics of India doesn't even originate in its borders. It comes from outside. Ideas come from outside, agendas come from outside. Otherwise, please tell me why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? I mean, I gave you the example of Assam. Yeah. I mean, people speak about, okay, you had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? If that was your concern, that you felt suddenly one day, okay, I'm very humanistic and I must get justice for people who have been done wrong. So look, don't kid yourself.
This is politics at play. This is politics at play by people who do not have the courage to come into the political field. They want to have the Teflon cover saying that, I'm an NGO, I'm a media organization, etc. But they are playing politics. ये थ्योरीज है, ये उन्हीं लोगों के पास से आएगी जिनके पास कोई जवाब नहीं है. और कल जयशंकर जी ने बात करी कि लोग इन्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेस को नैरेटिव शेप करने के लिए. और पूरे सर्वसम्मान से मैं इसको राजनीतिक रखना चाहती हूं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहती हूं. लेकिन आपके पुत्र एस्पन इंस्टीट्यूट में थे, जहां पर जिनका आपने नाम लिया, जॉर्ज सोरोस जी की कंपनी ने खूब फंडिंग करी है. आपके पुत्र लोई इंस्टीट्यूट में थे, आपके पुत्र ब्रुकिंग्स में थे, आपके पुत्र तमामों ऐसे इंस्टीट्यूट में, जर्मन मार्शल फंड में थे. इन सब की फंडिंग फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस करती हैं. तो जब तक आपके पुत्र वहां पर रहे और अभी भी हैं, और वहां से फिलैंथ्रोपिक फंडिंग ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसे लोगों से आ रही है नैरेटिव शेपिंग के लिए, तो कोई गड़बड़ नहीं है. आप अगर उस पर बोलते हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश हो जाती है. तो अगर इंटरनेशनल साजिश हो भी रही है, अगर आपकी बात मान भी ली जाए, तो मुझे बस इतना बताइए कि इस इंटरनेशनल साजिश को खत्म करने के लिए देश का विदेश मंत्री क्या कर रहा है? क्या आप फेल नहीं हो गए? क्या आप बुरी तरह से विफल नहीं है?